Hello guys, welcome back to Shecode. So this is the part 2 for problem 41. The problem 41 is to remove duplicate elements from an array, and in the first part we solved this problem using a simple for loop. But in this part, we will be solving this problem using HashSet, which is the easiest method. HashSet जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क में सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है और HashSet में यही होता है कि HashSet सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है. तो हम क्या करेंगे, हम एक नया HashSet बनाएंगे और उस HashSet में इस एरे के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे. सो बाय डिफ़ॉल्ट वो HashSet सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करेगा. सिंपल, बस इतना ही. इट्स हार्डली अ 3-line कोड. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. इन आवर प्रोग्राम हम यहाँ लेंगे यहाँ पे एक एरे. अब हम एक HashSet बनाएंगे. ठीक है, उसके लिए HashSet का हम नाम अभी दे देते हैं HashSet. ओके, equals to new HashSet. अब एक फॉर लूप यूज करेंगे. उस फॉर लूप की हेल्प से वी विल ट्रैवर्स थ्रू आउट आवर एरे एंड वी विल ऐड एवरी एलिमेंट टू आवर HashSet. फॉर लूप int I is equal to 0. I should be less than array dot length and I plus plus. Now inside this for loop I'll be adding every element to our HashSet. For that I'll take our HashSet dot add array, every element I of array. So here, after using the for loop, we have added every element that is present at index I in our HashSet. That's it. Okay, you just have to do this much only and then we will print our HashSet. Let's run this program and check if it is removing all the duplicate elements from the array or not. Okay, as you can see, all the duplicate elements are being removed. Okay, now in the HashSet, the order doesn't matter. Okay, the elements can be present in any order, but it only contains unique element. So this was the direct way to remove duplicate elements from an array. The time complexity of this program is big of n, as we have just used a for loop to traverse through the array. So this was our part 2 for problem number 41 to remove duplicate elements using HashSet. Okay, if this tutorial was helpful to you, do like the video, share it with your friends, subscribe to Shecode if you haven't subscribed. Thank you, bye bye, happy coding.